Actually, I didn't sleep. I was just resting. I was charging myself up. Argument karna is not a tough task. Argument jeetna is. Law karna is not a tough. It is tough, but then again, if you are going to be an advocate, you need to know how to win your cases. The same goes for arguments. You can't just blabber anything out, and if it is not making any kind of sense and if you're not winning your argument, then there's no point. So मेरा काम argument बस करना नहीं है. I even win those arguments, you see. No, it's not like that. Sometimes even I get a lot of negative thoughts in my head, but I have made peace with one fact that nobody else is going to keep me happy. I am responsible for my happiness, and that is where the whole story starts and ends. If you stop giving anybody else that power to make you happy or sad, you'll not completely ever be happy, because nobody can make you happy like that. The best thing that you can ever do for yourself is give all that power to yourself, to make yourself happy, to make yourself sad and whatsoever. And never expect a lot from anybody, like any kind of companionship, neither your family nor your friends nor your partner, nobody. Just expect a lot from yourself and your work will be done. I know it sounds simple, but I do block a lot of people whenever you're not going to. I just believe in this philosophy that you're not going to irritate me on my very own phone, which I bought with my very own money. That is not happening. Either this phone is going to make me happy, or it is not going to do anything else. Or it is, the least which is going to happen is it is not going to make me angry. And whenever something tries to do that, somebody pokes me or tries to make me angry or anything like that, I just block people. I don't think twice before blocking people. And that is one thing I feel that I should not do, because sometimes people just don't mean a lot of things and they just type it out, but they actually like me too. But then again, I block. I'm like, fuck it. Oh no, why am I? It's okay, fine. In men, I notice one thing, that how his friend circle is, because that defines a lot about a person, the kind of people that you hang out with. And another is what kind of jokes that guy laughs at, because even that defines a lot, that what you think is funny defines a lot about you. If you laugh at something which I'm not okay with, then you're just not meant for me. I don't know if that makes sense, but it is what it is. I do follow these two rules a lot. There's a very simple thing which I would like to tell, that as time passes by, trends pass by, people's preferences pass by, even my personal preferences have changed. So now I post what I feel like goes with my feed and my aesthetic, and I post what I like the most. I don't want to post something which I don't like, and I just something which I'm doing just because I have to post, and that's not my type anymore. I just want to do something which I truly genuinely like, and I post that only. It's not like that I just don't disappear sometimes without informing people. I do, but that is when I get caught up with things and I don't get time to make videos and come here and inform people about it. And I hate it when I'm tired, because when I'm tired I can't really do stuff. Like right now I am tired, but I was feeling this sudden urge that I have not come here and spoken for a really long time. And believe it or not, whenever I come here and talk, it is kind of a therapy for me too, because I love when people listen to me. Like they actually listen, not just कि हाँ सुन रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा. I love it when people listen to me and they understand what I'm speaking. And here it's not like I'm just speaking, looking at the camera. Here people religiously listen and follow to what I speak. So I just love it a lot. And I love it when people listen to what I'm speaking and they comment on that. I love it. A very funny moment happened this Diwali. We were out on the day of Diwali, and this time it were not a bunch of kids. It was like they were adults, full-fledged adults, and road पे they were like burning, क्या बोलते हैं उसको,
क्रैकर्स एंड इट वो आवाज़ करने वाला था, जिससे नहीं होता है ऐसा जलाकर ऐसा हवा में फेंक दो और वो जो भी होने लगता है. एंड वी वर पासिंग बाय द रोड एंड मेरे को वो दूर से दिख गया था दैट दे आर डूइंग, और मेरे को लगा ये हम लोग के ऊपर फेंक दिया तो मतलब नॉट डेलिबरेटली बट अगर फेंक ही दिया तो क्या ही कर सकते हैं. दैट सो आई स्टार्टेड शाउटिंग कि अरे भैया रुको रुको रुको. एंड उसमें से एक ही लिसन्ड टू अस एंड ही वाज लाइक, उसने ना अपने से कैसे उसने अपने दोनों हाथ जैसे खड़े कर दिए. ही वाज लाइक नहीं नहीं ऐसे करके वो डूइंग समथिंग. एंड या एंड वन, oh god, I'll tell you what happened. I was wearing a very heavy dress, all right. The next thing which happened is उसके 5 मिनट बाद we were going and I was wearing a very heavy dress, you could see. I did post the story, right? Yeah, I did. So I was wearing a heavy dress और वो ना मेरा ऐसा पीछे से वो थोड़ा सा पोछा मार रहा था. तो ये अंकल भी नहीं, ये चाचा दादू की उम्र के, वो मेरे को बोल रहे हैं क्या मेरे को ही उन्होंने आंटी बोल दिया कि अपना कपड़ा संभाल के चलो. और मेरे को तो पहली बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने बोला क्या. फिर 5 मिनट बाद जब आई पुट अ लॉट ऑफ माई ब्रेन ऑन इट, फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा उन्होंने मेरे को बोला क्या. और मतलब मैं बच्चे हूँ और वो बुढ़े अंकल वो मेरे को बोल रहे हैं. सो क्यूट. मेरे को बहुत ज़्यादा सारे टेड टॉक्स करने के बाद मेरे को आदत पड़ी है टू टॉक प्रोफेशनली. नहीं तो मेरे तो मुंह से निकल जाती थी भाई, मेरे से तो नहीं कंट्रोल होता है गुस्सा. अभी भी कभी कभार ऐसा फ्लो में निकल जाता है. सो हम लाइक छोड़ो. मेरे को लगता है आई एम नॉट डेलुलू, आई एम जस्ट वेरी मच कॉन्फिडेंट. मेरे को लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वही सच है. आई रिलीजियसली फॉर दिस कि मेरे को जो लग रहा है वही सच है, वही होगा. अरे भाई, आई डू शेयर माई पिक्चर्स एंड वीडियोज़ एंड टिकटॉक्स आर द ओनली थिंग विच आई हैव टू शेयर ऑनलाइन. इफ़ आई विल नॉट शेयर दोज देन वॉट विल आई एक्चुअली शेयर. क्योंकि बाकी थिंग्स इन लाइफ आई ट्राई टू कीप इट वेरी प्राइवेट बिकॉज आई डोंट लाइक शोइंग ऑफ माई पर्सनल लाइफ and showcasing my life on social media a lot. But then again, I am very much happy and I'm very much okay by posting myself. If I have to just post myself, I'll happily do that and I do it. What do you mean? क्या मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं है? I feel it is very nice. Okay. हाँ. अरे यार, I will try to post a lot now. I will. यार, इसमें तुम लोगों की भी गलती है. मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरे को याद दिला दिया करो, याद दिला. तुम लोग को खुद याद नहीं रहता, तुम लोग मेरे को क्या याद दिलाओगे? ये नहीं, मैं आई एम प्रिटी श्योर कि एवरी टाइम व्हेन आई कम टू डू दिस टेड टॉक थिंग, आई एवरी टाइम टेल यू ऑल कि मेरे को याद दिला दिया करो. एटलीस्ट महीने में 2 बार तो दिला दिया करो. तुम लोग भी नहीं दिलाते हो. तो ये मेरी इंडिविजुअल गलती नहीं है, ये सबकी कलेक्टिव गलती है. मेरे को बोलना बंद कर दो. डिमांड फॉर वॉट यू वॉन्ट वेरी केयरफुली बिकॉज यू नेवर नो इफ यू माइट गेट वन डे एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट. यू विल बी इन ट्रबल बिकॉज यू आर द वन हु इज आस्किंग फॉर इट. नहीं झेल पाओगे, दिक्कत हो जाएगी लाइफ में. Yes, me and my dad, we were sitting and watching the World Cup. I hope this is about the World Cup. This is. So yeah, firstly I slept. फिर जब मैं उठी, then I went to my dad's room and he was watching and India was losing terribly. And इतनी ख़राब स्थिति पे हम लोग आ गए थे कि वी गॉट सो इरिटेटेड कि हमने म्यूट कर दिया. वी वर लाइक ओके वी हैव टू वॉच इट बट हम लोग म्यूट करके देखेंगे बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट सुनने में. वो जो कमेंट्री वो लोग पीछे से करते रहते हैं, क्या सुनना है भाई? हम लोगों को दिख रहा है दैट वी आर लूजिंग. यू डोंट हैव टू शाउट एंड ये छक्का ये चौका मत करो, रहने दो. अरे भाई, बोल तो रही हूँ, ये मेरी अकेले की गलती नहीं है, तुम लोग की कलेक्टिव गलती है बिकॉज यू गाइस डोंट रिमाइंड मी. अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो लाइफ में. You should not avoid accountability, Breakups and patch-ups are very essential things in our lives. We all should go through
2 or 3 breakups at least, because that makes us go through a lot of personality development, and you'll get to know what you want from your partner in life in future, because your first relationship never actually works. Only like out of 100% of the people, only 1% are the ones जिनका पहला relationship work out करता है. So, and I don't believe that me and you are that kind of lucky जो हमारा कर जाए. So it is like breakups are necessary. You'll always learn a lot of things from it, and you'll learn what kind of people you like, so that आगे चल के when you turn a certain age जहाँ पे you cannot afford having a lot of breakups and patch-ups and casual relationships, वहाँ पे you will like वहाँ पे तुमको पता होगा कि तुमको क्या चाहिए. उस टाइम पे तुमको उतना सोचना नहीं पड़ेगा that what do you want from life. Oh yes, I used to do that too, right? I totally forgot about that, but I will share because I have a lot of underrated songs which I listen to and I love, absolutely adore them. But then again, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, it costs money because my playlist is a masterpiece. क्या मतलब टाइम वेस्ट हो गया, और जो मैं बोल रही हूँ वो मतलब मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो. नॉट फेयर गाइज, नॉट फेयर. तुम लोग उसके बाद रहा भी नहीं जाता बोल के कंपनसेट नहीं कर सकते. आई एम एक्चुअली हर्ट, मेरे दिल को दुख हो रहा है. A lot of my pretty girls are asking me about my hair care routine, but I think I have said this several times that I don't actually have a specific hair care routine. But one thing which I do follow is that I always oil my, not always but most of the times I try to oil my hair before I go for a hair wash. And secondly, my shampoo keeps on changing. It's not like a definite one which I have been using for a really long time, because I don't like using the same shampoo for a very long time. And yeah, and I use whatever shampoo and conditioner there is at my house. I don't have a hair care. What should I tell you all? It's genetical, I guess. I don't do a lot for my hair. Even I was missing doing all of it a lot. And I love it when I start talking and I blabber whatever comes to my mouth. I absolutely love that feeling. No worries, I am here now. मेरे को तो थेरेपी के भी पैसे लेने चाहिए यार. तुम लोगों को पता है थेरेपिस्ट एक सेशन के कितने पैसे लेते हैं? मैं तो फिर भी कितनी राजा हरीशचंद्र बनती हूँ. I cost nothing. I am a very nice person. I feel that you all should be very grateful to me. तुम लोग मेरे को हाइप करो. No, that is a very concluding line, and it needs no definition at all. It is what it is, and that is that. Now it's done. Most probably I will sleep. मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ. स्टार्ट तो मैंने कर दिया, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट हर बार देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ. एंड इट्स लाइक ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैनी आइज के, बट इस बार तुम लोग कौन से स्पीड में क्वेश्चंस कर रहे हो मेरे को. मैं एक स्क्रॉल कर रही हूँ, रिफ्रेश होके वो 4 और आ जा रहे. इट्स इम्पॉसिबल. सारे का मैं स्क्रॉल भी नहीं कर पा रही हूँ. तुम लोग पागल हो चुके हो. वाओ, आई लव इट, बट देन अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई लव इट. If you're watching it for the very first time, that means that you are like a new follower, something like that, because I do it a lot. My content is not my videos which I post. My content is my TED Talks, and that is what I've heard from like every person that I meet and every follower of mine. The ones who have been following me for a long time, they are like, your videos are not your content, your TED Talks is your content. And now even I have started to believe it, that my TED Talks is my actual content and not my reels and videos. So yeah, stay tuned for more. I am very happy with my new hair. मतलब I do miss my old hair a little bit sometimes, but I'm very happy with my new hair because I love the thing which I did with my hair कि आगे से छोटा and पीछे से लंबा. Because people get like कि अरे I thought that तुम्हारे बाल इतने ही है पर इतने हैं, and I'm always like haha, yes, I tricked you, right, I did. ये हेलो, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे को लेने चाहिए पैसे. मैं ले भी नहीं रही हूँ. हाँ नहीं तो
No, here not even 50% of the people get proper replies because I get a lot of questions. You guys have no idea how much I have to scroll through every time I post it. But then again, I love all the questions. Although I'm not ever able to, check all the questions, but the ones which I go through, I kind of read. And yep, not even 50% of them get covered. मैं बहुत कम स्टोरी डालती हूँ and the questions are in thousands and thousands and thousands. I love doing Nautanki. Oh, thank you so much. But then again, you don't have to record it because some of the questions from every TED Talk session I add to my highlights. Not all, but some I do. ये मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है, अभी मेरे को याद आया. I will. Maybe that can be because I'm growing up and I'm learning new things and I'm learning stuff about life, and that is changing my perspective a lot about a lot of things and how I process stuff. Maybe that can be a reason. Not law. How can law be the reason? But I would say because I'm growing up. I'm growing for good, I would say, and all the changes which I'm seeing in myself, I feel that they are excellent. And I feel like everybody who has been following me or has a hint of what kind of a person I am, and the people who actually enjoy what I speak and whatsoever, and they are like making fun all the time कि हाँ अभी तो तुम सो जाओगे स्टोरी डाल के, हाँ अभी तो ये होगा, हाँ अभी तो वो होगा. And मतलब the fun which happens when I do stuff, I feel like those people are my family, and most of you have adjusted and have got the figure of what I am as a person. So I love it, and I feel a very close connection with all of you mostly. Yes, some names I even remember, and some accounts I remember DP से, या फिर जब मैं यूज़र नेम देखती हूँ तब मेरे को याद आ जाता है कि ओके, there are many who I remember that have been following me for a very long time. And yeah, I feel excellent that people can stick by you for such a long time when they have not even met you for real. It feels surreal, and the feeling is, I can't explain in words. It's very special. I like it a lot. Wow, I love it too. जी नहीं, मेरी आवाज़ बच्चों जैसी नहीं है, बट देन अगेन आई डोंट लाइक माई वॉइस अ लॉट, बट फिर भी मैं बोलती इतना हूँ. मतलब फॉर अ पर्सन जिसको अपनी वॉइस नहीं पसंद है, मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ. आई टॉक अ लॉट एक्चुअली. मेरे को बस एक बार टॉपिक मिलना चाहिए, फिर मेरे पास बात बहुत होती है करने के लिए, लेकिन विथ स्पेसिफिक पीपल. मतलब इन रियल लाइफ आई डोंट लाइक टॉकिंग टू एवरी पर्सन दैट आई मीट, बट एक बार मैं मिल के मैं अपने कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ, फिर मेरे को बोलना बहुत पसंद है. एंड यहाँ पे तो आई ऑब्वियसली टॉक अ लॉट, क्योंकि आई फील लाइक यू गाइज आर माई फैमिली. आई डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एवरी टाइम. यार, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, टेड टॉक स्टार्ट करने के पहले मेरे माइंड में ये रहता है कि पूरा हिंदी में बोलना है, लेकिन ना मेरे मुंह से निकल जाती है यार. डोंट प्ले हार्ड, प्ले स्मार्ट. केक में डालो जहर, then it will not taste bad also, and you will die too. My dad has no say in my career or anything. Actually, he never says anything. He's like, जो करना है करो. Moreover, he's like, if I would have chosen a career which he would have thought that is not fit for me, वो मेरे को लेने ही नहीं देते. मतलब in a way कि अगर वो hard होता ज़्यादा, मतलब if I would have opted for science, he would be the first person जो बोलते no, I am filling your form for commerce or arts. He would have never let me choose science because he knows how bad I am at math and all those physics and stuff. Physics? Yeah, whatsoever. I don't remember exactly. But he is that kind of father who would not ever force you for anything, and he'll not let you do something too hard because he'll feel like you will get too much pressurized, and he never wants to see me like that. So yeah. By this time I have posted so many stories because I realized that I am doing TED Talks after such a long time, so I should
रिप्लाई टू एज मैनी एज पॉसिबल, बट अब मेरे को आ रही है नींद, अब मेरे से नहीं हो पाएगा. मतलब हैव यू गाइस एवर नोटिस्ड कि जब मैं टेड टॉक्स चालू करती हूँ तब मेरा मूड होता है पूरा सीरियस, पूरी नींद में मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं सोकर उठ के करती हूँ एवरी टाइम. सो शुरू में ऑल द स्टोरीज 4-5 स्टोरीज आर एकदम सीरियस वाली, एकदम मुँह मेरा बना हुआ रहता है सीरियस सा. देन बीच में आई एम लाइक ओके, वो वाले अपने मूड में मैं रहती हूँ, और फिर लास्ट में मेरे को नींद आने लगती है. देन अगेन आई एम लाइक भाई अब नींद आ रहा, अब नहीं होगा. बट देन अगेन आई हैव पोस्टेड अ लॉट ऑफ स्टोरीज टुडे एंड नाउ आई फील लाइक आई नीड टू स्लीप. और तुम लोग भी आज पूरे जोश में हो, मेरे को स्क्रॉल करने का टाइम नहीं मिल रहा है. इतनी स्पीड में क्वेश्चन मत करो भाई. बाय बाय, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप. लव यू ऑल, अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस. मेरे को रिमाइंड करो कि आई विल डू इट जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, और तुम लोग मेरे को रिमाइंड करो. अगर तुम लोग नहीं करोगे तब मेरी दैट इज़ वन थिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. मतलब पता है मेरे को, अगर मैं गलत बोल देती हूँ ना तो फिर मेरे को ऐसा टाइप का होता है कि यार मैंने गलत बोल दिया. आई डू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, बट देन अगेन आई डोंट लाइक मेकिंग मिस्टेक्स, स्पेशली एट द थिंग विच आई लाइक डूइंग, लाइक स्पीकिंग. मतलब not only English, even Hindi or whatever, I'm very particular about my language. So if I'm speaking in English, I need to have a perfect balance of whatever I'm speaking, it should be perfect. If I'm speaking Hindi, my language should be perfect. मेरे को आलतू फालतू उल्टा सीधा बोलना पसंद नहीं है, where I'm using, मतलब जहाँ पे I'm not correct. तो I'm very particular about that. Yup. Be it English, be it Hindi, I speak very सोच समझ कर नहीं बोलती हूँ, बट गलत भी नहीं बोलती हूँ.